Very good evening. Welcome, Kya Halba from Bihar, Patna. At this moment where I am situated, this bright broadcast coming to you from this beautifully lit Vidhan Sabha of Bihar. The battle for Bihar is for the majority in this Vidhan Sabha and to form the government for the next 5 years. The battle now turns decisive as the voting for the second phase will begin tomorrow at 7 a.m. 20 districts, 122 constituencies will be seeing political action in Bihar and will seal the fate of more than 1,300 candidates. 3.7 crore voters, ladies and gentlemen, will be exercising their franchise in the second phase of electoral battle of Bihar. Now, let me very quickly give you an overview because last time it was the second phase where the NDA had a clear edge. In fact, they were more than 60 seats and the Mahagathbandhan was in the late 40s, and that's where the election was decided in 2020. This is the phase where the Mahagathbandhan would hope that they can accelerate and be in the fight when the results would be declared on 14th of November. Now, very quickly, let me give you some more data as, we would be, in fact, bringing you the ringside view, not only of the voting, but also the exit poll tomorrow and then later on the result day. BJP has 53 candidates and JDU has 44 candidates in fray. In the last phase, the second phase of polling, RJD has a mammoth 71 and Congress 37 candidates, with Jan Swaraj also pitching 120 candidates for the second phase of elections. In 2020, as I told you, ladies and gentlemen, the BJP won 42 seats in the second phase and the RJD won 33, JDU 20 and 11 were won by the Congress party. Left was able to win 5 seats in the second phase. Now, the important factors among everything else would be the battle of Seemanchal. That would be a closely fought battle, and this is where for the Mahagathbandhan the Congress becomes a crucial factor. Among all the things that the Congress party has done or not, if the Mahagathbandhan has to cross the finishing line, this is where the Congress would have to perform much better than what they did in 2019 election. With 24 seats across 4 districts of Seemanchal, which include Kishanganj, Katihar, Purnia, Araria. And last time, the BJP had won 8, Congress 5, JDU 5, AIMM 5, and the RJD and CPIM won 1 each. Now, Asaduddin Owaisi has campaigned extensively in this region. This time it will be interesting to see whether there is some sort of consolidation behind Congress and the Mahagathbandhan in this, because many of these constituencies are Muslim majority constituencies, or Asaduddin Owaisi is able to take out a large chunk of the voters as far as this phase is concerned. So a lot at stake, ladies and gentlemen, here in the Battle of Bihar, and phase 2 is going to give either the Mahagathbandhan or the NDA that decisive lead that will propel them to the majority in this 243-member Assembly of Bihar. Before, in fact, I move further, I also want to tell you there has been a lot of questions because, a lot was said, written, spoken about the high voter turnout of the first phase. Historic by many terms as far as Bihar is concerned, about 65% voter turnout. But one question that people are asking, where is that data of the male and female voters? Though we saw queues of women voters longer than the men in at least few of the booths that I went to, but a lot of equations are being derived from whether women have voted more, because traditionally now in Bihar they are seen as a captive vote bank of Nitish Kumar. In 2020 election, wherever in most seats, I should not say wherever, in many seats where the women voter outvoted the men, JDU had an advantage, or the Gathbandhan, the NDA, had an advantage. Is it the same this time in absolute numbers? The Election Commission has so far not given any data officially. Where is this, jump from 8 or 9% voters coming from? That's the question that a lot of analysts are still asking. Tejasvi Yadav, in fact, the face of the Mahagathbandhan, the chief ministerial aspirant, also questioned the Election Commission on why the data has not been released so far.
पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। दिस इज अ जोक। कितना टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। ये बताओ, अमित शाह और मोदी जी के राज में इलेक्शन कमीशन ठप हो गया है। 4 दिन हो गए, अभी तक आंकड़ा नहीं आया कि कितनी महिलाओं ने वोट दिया, कितने पुरुषों ने वोट दिया। जब तकनीक में हम पिछड़े थे, हमारा देश जब तकनीक में पिछड़ा था, तब रोज शाम को आ जाता था चुनाव के दिन। अब तकनीक में हम बहुत आगे हैं, हम तो डिजिटल इंडिया है। उसके बाद भी 4 दिन के बाद चुनाव आयोग आंकड़े क्यों नहीं दे रहा? ये एक रहस्य है जिस पे पर्दा उठना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग साथी जो हैं हमारे मीडिया के, वो इससे पर्दा हटाएं। बिहार नहीं इनको चोरी करने देगा, लेकिन चुनाव आयोग की पोल खुल रही है बिहार। The BJP along with the NDA is going to register a decisive, sweeping and historical victory in the Bihar Assembly elections. और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि श्रीमान तेजस्वी जी अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं दोनों क्षेत्रों में, भ्रष्टाचार में और कुशासन में और खौफ में। Let me very quickly bring in at this moment, because, we'll keep talking about if you get the politicians, it will become a tutu meh right in the end. People have heard a lot about these politicians and from them in the last 1 month. But Amitabh Tiwari is joining me at this moment, founder of Vote Vibe, political strategist. We also have Satish K. Singh, senior journalist, who's also joining me at this moment. Gentlemen, thank you so much for taking the time out and speaking to us. Amitabh, let me understand first from you, because you do a lot of data crunching, and this whole male-female breakup from the election commission not coming even after 4 days, though the ECI says that, we usually give it in the final voter turnout. Is it unusual? And for somebody who is looking at all the statistics, the narrative which is being made, how crucial is this data of the number of men and the women voting in the first phase of election? So the data is crucial because we have seen in the past that whenever the women turnout has been higher than the male turnout in Bihar, it has specifically benefited Nitish. Correct? Because Nitish won with NDA in 2010, with Mahagathbandhan in 2015, and with NDA again in 2020. So that's why this data is important, because we've seen and heard a lot about the impact of the rupees 10,000 Mahila Rozgar Yojana. And we need to understand that out of the 65% overall turnout, how much is accounted for by women and how much is accounted for by males or men. Because that significant alpha, if the alpha is significant, and as per reports, I think across local newspapers, they have published even district-wise numbers. Correct. So as per reports, unconfirmed, is 7.5% lead for women in the turnout versus males. So women turnout is more by 7.5% versus males, as reported by some newspapers, and district-wise data has also been published. So if it is 7.5%, and if there is a continuation of the trend, then it may benefit JDU as it has in the past. So that's why this data is important to make sense of. And over the years, Right. compared to 2005, only 1.04 crore women had voted. In 2008, it became double, 2.08. In 2005, 1.41 crore males had voted, but it became only 1.5 times. 2020, it was 2.11 crore. So in this 15-year period, women votes cast has doubled, whereas male votes cast has become 1.5 times only. And the gap also has narrowed. It used to be 37 lakhs in 2005. Last election, it was just 3 lakhs. And this election, it could be almost equal or even surpass men in terms of absolute numbers. Okay. Satish ji, let me bring you in at this moment.
Do you believe that because there is a lot of chatter about why this data is not coming out? The Election Commission says that, we usually give it when the final voter turnout is calculated. That would be after the first phase of polling. But the fear, at least in the opposition, is that this is being used to create an atmosphere that women are voting more, and hence it's an advantage to NDA. And that is why the data is not being released, because we'll have to also see in absolute numbers how many men and how many women have voted. I don't agree with this, but it's a bad news for Amitabh because the gender-wise data has not come as yet, and it will be a difficulty for him to crunch the data and bring some conclusions. So, having said that, let me add one more thing. Well, one should be happy that at least the data of overall voting percentage has come so soon. If you remember, in 2024 elections, it took a long time to bring out the data phase-wise, very long time. Third thing is, you see, Election Commission is, on the radar of attack by the opposition parties. And I also believe personally that this is the last chance, insist on the word last chance, for the Election Commission to reclaim its credibility. So these are the three things. But the specific question that you asked, yes, women has been voting much more for Nitish Kumar. That's a historical fact. But this time, I don't know what Amitabh's data says, because if there is no data for women, male, there might not be data for the Yuvas also. But I think Yuva also have turned out in large numbers. Absolutely. And this is I tell you one thing. In my view, I'm not a data cruncher, but I believe that there is a photo finish kind of election from seat to seat. Seat to seat, it's a photo finish. Believe me, you. That I agree, sir. But I somewhere agree to what you're saying. I've spent now considerable amount, in Bihar, and I can tell you it's a very hyper-local election. People are largely talking about their MLA, who they like, who they don't like. It's not about, either electing Tejasvi Yadav or dethroning Nitish Kumar. It is a very hyper-local election where people are largely talking only about their local issues and their local MLA who they want to. So that, Amitabh, do you believe that, traditionally, when you talk about the voting percentage, a higher voting percentage has an impact on whether it is pro-incumbency, anti-incumbency? I was hearing Prashant Kishore giving some interviews in which he was saying that, a higher voting percentage is against the incumbent. Is that the sense that we should draw from that? I mean, there is no direct correlation. If that was the case, Nitish would have lost all the past three elections, correct? Because in all the three elections, there is a higher voting turnout than what was there in the previous election. But of course, Nitish is the common denominating factor. In 2010, when turnout was higher, NDA came back to power and Nitish became CM. In 2015, on account of a higher turnout, Nitish was the common denominator. He became CM, but the government was formed of the Mahagathbandhan. And in 2020, again, the turnout declined, I think, marginally, or increased marginally, perhaps. Increased marginally. And again, Nitish became CM. Correct, but with different partners. So you have now in Bihar a history of repeat turnout increases, with the incumbent chief minister coming back, but with different partners, in two elections with NDA and in one election with the Mahagathbandhan. Even if you see at the national level, in 2014, turnout increased, anti-incumbency vote, Modi came to power. In 2019, again turnout increased, pro-incumbency vote, Modi retained power. In 2024, turnout actually has declined. Right. But Modi has retained power, seats have fallen. So it's a mixture of pro and anti-incumbency vote in that sense. So it's very, very difficult to make any prediction. And incidentally, leave male, female, the Election Commission of India never releases the age-wise
data. Correct. So that makes it more complex for people like us. Yes, yes. Absolutely. And that becomes also very important because the Mahagathbandhan, Satish ji, is banking on the youth vote, on their promises of jobs and factories coming here and so forth will stop the Palayan as their main stake in the election. We are now standing few hours away from the voting which will begin. In fact, 12 hours away from the voting which will begin for the second phase. Satish ji, as per you, what are the three important, in fact, factors that will determine the second phase of polling in Bihar? Yes, you see, these are the areas. I will go area wise. Seemanchal, it's advantage Mahagathbandhan this time, in my view. It's an equal game in Mithila and Darbhanga side, those sides. But it's a battle for Mahagathbandhan in Magadh and Sahabad. What we saw last time, there was a complete rout of the NDA. This time, I believe it is not so. This is factor number one. The second thing is the large turnout are because of two specific reasons in my view. One, that people want to ascertain, verify if their votes, their name is there in the voter list, and there is some misconception also being spread that if you this time if you don't vote, your name will be deleted. So these kind of things are working. That's why the voting percentage is going up, and I agree with Amitabh ji that yes, voting percentage it's a battle of equals. When we say that it's a photo finish kind of a thing, and third thing, because of the PK factor, he might not get number of seats, but he's a multiplier. He's a third, fourth, and he also might have mobilized people. So it's a very close contention between the three parties. Yes. Okay. Amitabh, very quickly, because I'm completely out of time, what are the couple of things that you would be looking at, for the second phase, the crucial two factors? In the second phase, the seats where voting is going to be held, 65% of Muslim population of Bihar lives. So we have to see whether polarization like it has done in the past makes or has its impact or not. Whether the election becomes largely Hindu-Muslim or is divided on caste lines or becomes issue-based. That's the key factor for me, I think, polarization in phase 2. Okay. Amitabh, Satish Kesing, thank you so much to both of you for joining me at this moment. It has been an interesting campaign, and it is going to be a very interesting election result as well. We will have to wait and see whether it's a tsunami that the BJP and the NDA has been predicting, or is it a close election where a coin toss will possibly decide who is going to win the battle for Bihar. Gentlemen, thank you for joining me. I'm slipping into a short break, but on the other side, ladies and gentlemen, like I said, it's just not about the politicians, it is about you, the voter, your voice. I was in Bhagalpur and I caught up with the very popular, globally recognized Bhagalpur silk weavers. Is the art dying? What do the weavers want, who are always on the roadmap, at least in the speeches of political leaders when they descend in Bhagalpur? That report coming up after a short break. Think Bhagalpur and the first thing that comes to your mind are these beautiful Bhagalpur silk saris. They have become a globally recognized brand. In Bhagalpur, it's a 200-year-old tradition. Weavers have been churning these saris generations after generations. From handloom now to power looms.
35,000 weavers in Bhagalpur are engaged in this profession. When you look at these beautiful saris, it almost feels, surreal. I mean, imagine somebody wearing them. They're absolutely stunning. But what about the lives of those who are making them? From Prime Minister Narendra Modi to Rahul Gandhi, the leader of opposition, everybody comes to Bhagalpur, talks about them. What has changed in their lives? Let me take you to a journey and inside the heart of Bhagalpur, where weavers are making these Bhagalpur silk saris, and let's try and understand their struggles and the story of the Bhagalpur silk sari. मेरा नाम नीरज कुमार है जी नीरज जी। ये सिल्क साड़ी है। हाँ। फ्लेचर और मूंगा ये सिल्क है। फ्लेचर और मूंगा। हाँ। मुझे थोड़ा सा बताइए, ये मूंगा सिल्क है। हाँ। ये तो बहुत खूबसूरत आप बना रहे हैं। ये कैसे बनता है? ये मुझे जरा समझाइए, ये क्या हो रहा है इस मशीन में? ये जैकार्ड मशीन है। अच्छा। और इस पे जो है ये वर्क हो रहा है। ये जो है, हाँ, ये डिजाइनिंग वर्क हो रहा है। मोटिव बन रहे हैं। हाँ, मोटिव जो बन रहा है। हाँ। ये वर्क हो रहा है। ये कैसे होता है? ये इस खांचे के थ्रू आता है? ये इसके थ्रू आता है। ये जो है, हाँ, ये जो है ये पत्ता। हाँ, तो ये डिजाइन ये डिजाइन वगैरह भी बना बनाया आता है? आप लोग बनाते हैं? नहीं, ये सारा हम लोग जो है बनारस के में काम करवाते हैं डिजाइनिंग का। अच्छा। कितना समय लगता है सर इस अब पहले तो हैंडलूम से हाथ काम होता था, अब ये पावर लूम आ गए हैं आपके पास, तो अब कितना समय लगता है धागे से साड़ी बनने में, एक साड़ी बनने में? एक साड़ी बनने में कम से कम इसमें 4 घंटा लगता है। 4 घंटा लगता है? हाँ, 4 घंटा मैक्सिमम। आपका क्या नाम है सर? नमस्कार। मेरा नाम हेमंत है। हेमंत, ये पीछे जो हम देख रहे हैं ये क्या है? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये नली फिराने का काम हो रहा है और ये मूंगा सिल्क है। मूंगा सिल्क है, क्या मतलब होता है नली फिराने का? नली अगर नहीं फिरेगी तो हमारे पावर मशीन नहीं चलेंगे। तो जरा दर्शकों को समझाने के लिए, बना ताना का मतलब क्या होता है? बना मतलब आप यहाँ इसको बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं? नहीं। हाँ। ताना जो है एक ऊपर होगा एक नीचे होगा और उसके बीच से भरनी जाएगी, इसको बाना कहते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पर? इसके अंदर ये सब लपेटे जा रहे हैं, रोले जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ शटल है, शटल रोल वहाँ जाएगा। हाँ, ये शटल में जाएगा। तो ये वाला जो रोल है? नहीं, वो नहीं। ये सिंगल ऐसे निकलेगा, ये निकलेगा, ये रोल है, ये शटल में जाएगा। ये मुझे जरा दिखाइए, शटल कहाँ है? ये शटल है। तो इसके अंदर ये आके आप वहाँ पर ये पूरा इसको मतलब रोल तैयार होता है, फिर उसको आप यहाँ पे ले आके इसके अंदर रख देते हैं। बिल्कुल, उसके बाद तब ये मशीन के साथ चलती है, बीच में से फिर ये निकलता है और ये सब काम होता है। तो ये बताइए कि एक साड़ी बनाने में कितने ऐसे ये रोल लगते हैं? ये कम से कम 18 पीस। 18 पीस। तो ये 18 ये तैयार होंगे, फिर उसके बाद वहाँ जाएंगे, तब जाके आपकी एक साड़ी बनेगी। हाँ। तो जो साड़ी की कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है या इससे भी पहले से? इससे पहले से। इससे पहले क्या होता है? इससे पहले ये तैयार होगा, सबसे पहले ये तैयार होगा। ये जो रेशम है? हाँ, ये रेशम है। हाँ। इसको जो है बनाया जाएगा, फिर इससे इसमें आएगा। आप खरीद के फिर इसको लेकर आते हैं, फिर यहाँ पर काम शुरू? फिर यहाँ पर काम शुरू होता है। अच्छा। इसका। और जब ये तैयार हो जाती हैं तो देखिए ये सब तैयार है। हाँ, ये सही तैयार। ये जरा मैं आपको एक ये भी दिखा देता हूँ, कच्चा माल है। अभी इसकी फिनिशिंग होगी। बिल्कुल फिनिशिंग नहीं हुआ है। अच्छा। बाजार में जब आप जाते हैं, कितने की ये साड़ियाँ बिकती हैं जो आप लोग बनाते हैं? हमारी साड़ी अगर मैं खुद खरीदूं मार्केट से, बाहर से, तो मेरी साड़ी मुझे डबल कीमत में मिलेगी। आपको उसको बनाने में कितनी लागत आती है और आपको क्या मिलता है उसका? उसमें देखिए हम लोग को मजदूरी मिलता है, सिर्फ सूता का जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका सिर्फ मजदूरी 400 रुपये तय नहीं कर सकते हैं। मजदूरी तय, जैसे कि एक मोची के यहाँ जाते हैं तो वो दिखाएगा कि भैया तो महंगाई बढ़ते जा रही है, अब हम 10 रुपये की जगह 20 रुपये लेंगे, लेकिन हम ये महाजन को नहीं कह सकते कि हम मजदूरी इतना लेंगे। मजदूरी हमारी महाजन यानी पूंजीपति तय करते हैं कि हम इतना देंगे। तो वो दिन के हिसाब से मिलती है, साड़ी के हिसाब से मिलती है? वो हमें साड़ी के हिसाब से मिलती है। पर पीस? कितना मिलता है पर पीस? पर पीस तो साड़ी बनाते हैं कैसे? हाँ, जैसा साड़ी वैसा रेट। कम कितना मिलता है, ज्यादा से ज्यादा कितना मिलता है? देखिए 100 रुपया का भी है, साड़ी बनाने वाले को मिलता है, कम से कम 500 भी मिलता है। 100 से 500 रुपए तक आपको मिल जाता है। जब भी नेता जब भी आते हैं भागलपुर, सब इतनी बात करते हैं भागलपुर सिल्क की, और इतनी कि बुनकरों के लिए ऐसा करा जाएगा वैसा करा जाएगा। क्या क्या
सुविधाएं सरकार से आपको मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही हैं? योजनाएं बहुत सारी हैं, सरकारों की योजनाएं बुनकरों के लिए बहुत सारी है, लेकिन योजनाएं सिर्फ फाइलों तक है, बुनकरों तक नहीं है। बुनकरों के बीच में कभी आवे नहीं करता वो सब कोई योजना कारण है हम लोग तक पहुंच ही नहीं सकता है। उसके पीछे कारण ये है कि बुनकर क्षेत्र में उद्योग विभाग नहीं है। उद्योग विभाग बुनकर क्षेत्र में होना चाहिए, ना कि 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर होना चाहिए, पहली बात। दूसरा कि सरकारी ऑफिसर बुनकरों के पास आ करके, अगर हम बुनकर दिन भर जाएंगे ऑफिस के चक्कर लगाएंगे तो वो बीनेंगे क्या और खाएंगे क्या, ऑफिस के ही चक्कर में रहेंगे। तो बुनकरों के पास में एक ऑफिस होनी चाहिए, उसकी शाखा होनी चाहिए, जिससे कि बुनकरों को उनका योजनाओं का लाभ मिल सके, फाइलों तक सीमित ना रहे। योजनाओं के लाभ सिर्फ पूंजीपति उठाते हैं, मूल बुनकर नहीं उठा पाते हैं। किसी भी नेता के लिस्ट में यह मुद्दा नहीं है कि बुनकरों के लिए क्या करना है। बुनकरों की तो बात ही नहीं है किसी भी नेता के लिस्ट में। तो बुनकर जब वोट करते हैं तो वो क्या सोच के वोट करते हैं? वो तो सोचते हैं कि आगे भविष्य शायद हमारा अच्छा हो, कोई अच्छे प्रतिनिधि। भागलपुर को कभी प्रतिनिधि अच्छा नहीं मिला है। लेके करते हैं, चलो भाई बीजेपी है तो बीजेपी को हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जंगल राज को चाहते ही नहीं है। That's the, I think, it's a sad reality. We all love the Bhagalpur silk. We all love how the saris come across. We all love these shiny threads that then, in fact, you would want to buy for your mother, for your wife, for your girlfriend, or whosoever, sister. But the life of the people, those who give life to these saris, their life is in absolutely miserable condition. And I've seen this one after another, every house that I've been to here in Bhagalpur, from the weavers, those who are making these beautiful Bhagalpur silk sarees. It's just not the machine. It's a lot of, very critical handwork as well, which in fact gives that silk the finish that all of us like. Sir, ये क्या कर रहे हैं आप? जैसे धागा कट जाता है तो उसको भरते हैं। सिल्क का जो धागा कट जाता है। हाँ, तो ये तो बहुत महीन काम है। हाँ महीन तो है। कितने घंटा लगता है आपको एक ये करने में? छोटा रहा तो कम समय लगता है और बड़ा रहा तो ज़्यादा समय लगता है। किसी में आधा घंटा भी लग जाता है, कोई 10 मिनट भी लगता है। ये एक दिन में आप ऐसे कितने तैयार कर लेते हैं? कितने तैयार हो जाते हैं? 2 थान 3 थान। हफ्ते नहीं है, आंखें थक जाती हैं इसको ढूंढते ढूंढते? नया आंखें क्या थकेगी, करते करते आदत हो गया है। जैसे ये यहाँ पर है, इसमें आप धागा भरेंगे? हाँ, धागा भरेंगे। ये जो थोड़ा सा गैप दिखाई पड़ रहा है, तो ये हैंडलूम में जो तैयार हुआ उसमें जो थोड़ा गैप आया उसको आप यहाँ पर बनाते हैं। और इस कपड़े का फिर साड़ी बनेगा, सूट बनेगा, जो भी कुछ बनता है। हाँ, सूट भी बन सकता है, कमीज बन सकता है, पंजाबी बन सकता है, बहुत कुछ बनता है। दादा, आप कब से, कितने सालों से ये कर रहे हैं? 2000 से ये काम कर रहे हैं। 2000 से? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज आलम। तो दादा ये बताइए कि जब शुरू करा था तो चश्मा लगा हुआ था? जी नहीं। नहीं लगा था? जी नहीं, चश्मा नहीं। अब लग गया है? अब लग गया। तो कितना मेहनत लगता है इसमें? 7.5 घंटा हम लोग इसमें काम करते हैं। हाँ। जिसका कि मजदूरी 550 रुपया मिलता है हम लोग। 550 रुपया? जी हाँ, 7.5 घंटा काम करते हैं। 7.5 घंटा काम करने के बाद? जी। तो ये गुजारा हो जाता है 550 में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। कुछ घर में बाल बच्चा है, वो लोग भी कुछ न कुछ काम करता है, तब जाके गुजारा होता है। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू, ये मैं एक बार इसको ज़रा दिखा दूँ क्या कर रहे हैं आप। सो आफ्टर द मशीन व्हेन दिस क्लॉथ कम्स आउट, ये जो गैप्स हैं, these gaps are then filled by manually. What he is doing is filling these gaps manually, and it is an extremely intricate work that he is doing at this moment. ये बताइए, सब आते हैं यहाँ पे भागलपुर में, प्रधानमंत्री आते हैं, राहुल गांधी सब आके जो भागलपुर सिल्क है या भागलपुर के जो बुनकर हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा होता है बुनकरों को? कुछ फ़ायदा नहीं है। बुनकरों को
सही ढंग से कुछ नहीं मिल रहा, जो मिलना चाहिए बुनकरों को। क्या मिलना चाहिए बुनकरों को? बुनकरों को जैसे बिजली हो गया, अब जैसे कि कारोबार ठप पड़ा हुआ है, कारोबार हो गया हर जगह जो कि है माल जाना चाहिए, वो अदर कंट्री ये सब में अभी माल नहीं जा पा रहा है। तो परेशानी ही परेशानी है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, कुछ ध्यान नहीं दे रही है सरकार। तो बात करना, जैसे कि आप हमसे बात कर रहे हैं, क्या आप सरकार से बात कर रहे हैं कि आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बात सुने वो। इस बार चुनाव में आपको क्या लग रहा है? देखिए राहुल जी जो कि है बोल रहा है कि, और ये क्या नाम है इनका, तेजस्वी, कि सबको रोजगार देंगे। हम लोग पढ़ लिख करके ग्रेजुएशन करके 92 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद हम जो किया कोई ये नहीं मिला, तो लास्ट में ये काम कर रहे हैं। पढ़ लिखने के बाद ये करा है? हाँ, तब पढ़ लिख के लेने के बाद ये कर रहे हैं। नौकरी आपको लग रहा है सबसे बड़ा मुद्दा है? हाँ, नौकरी मुद्दा है यहाँ पे। हम लोग भी अपने बाल बच्चे को पढ़ाए हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिला है। लेकिन आप बताइए कि आप इतने तजुर्बेकार हैं, अपने बच्चों को आप बुनकरी में लगाएंगे? जी नहीं। क्यों? क्योंकि इससे जो क्या है आजीविका जो क्या घर का रोजी रोटी चल नहीं पाता सही से। इक्कत की रंगाई कर रहे हो आप? हाँ, इक्कत का है, इक्कत है और शर्ट सूट सब बनाते हैं। मगर सरकार को हम लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। मजदूरी इतना कम है, दिन भर काम करेंगे 12 घंटा रेगुलर, तो 300 रुपया होगा। इस रंग में डूबे रहोगे और 300 रुपये में? हाँ, इतना पानी में, ठंडा का दिन अभी आ रहा है, ठंडी का दिन में सुबह करेंगे 6 बजे सुबह से, और उसके बाद शाम तक करेंगे 300 रुपया होगा। क्यों नहीं बढ़ता है आप लोगों का जो 300 रुपये से? हम लोगों का कोई मंत्री ही नहीं है, ना ही संसद में बोलने वाला है, ना विधान सभा में बोलने वाला। सरकार जो है हम लोग के कोई किसी भी तरह का सुविधा नहीं मिला। क्या सुविधा चाहिए आपको? सुविधा चाहिए कि जैसे मजदूरी बढ़े, मेरा माल जो है डायरेक्ट हम लोग के द्वारा बाहर तक जाए। बिचौलिया लोग जो है, बीच में बिचौलिया सब है, वो लोग हम लोग का माल लेते हैं, कम मजदूरी में लेते हैं, वो फिर क्या करते हैं उसे नहीं पता। मगर हम लोग का जो है डायरेक्ट कोई ऐसा इंस्टीट्यूट भी नहीं बना है कि डायरेक्ट बेच सके। उम्मीद तो हम लोग नीतीश कुमार जी को भी देखें और लालू प्रसाद यादव को भी देखें, मगर ऐसा ही स्थिति चल रहा है। चुनाव के समय वादे करते हैं, कोई कुछ करते नहीं है। साफ कर रहे हैं इसको, फुला रहे हैं। फुला रहे हैं, तो ये सफ़ेद हो जाएगा इसके बाद पूरा? नहीं, इसके बाद कलर होगा। इसके बाद कलर होगा। तो ये क्या है केमिकल? ये साबुन जैसे शैम्पुल ना होता है, ब्लीच नहीं, जैसे कि शैम्पुल रहता है ना शैम्पू माथा में लगाने वाला, उसी तरीका का रहता है, सूता फुलाने वाला। अच्छा, हाँ, तो ये आप कितने घंटा करते हैं इसको? ये आधा घंटा में फूल जाता है। ये आधा घंटे में फूल जाता है। तो ये इतनी देर तक आप करते हैं, आपके हाथ में दिक्कत नहीं होता है? हाँ, होता है। दिखाओ, फूल जाता है सारा, जैसे गड्ढा हो जाता है, मोटा हो जाता है, छाला हो जाता है। हाँ। दिखाओ, यहाँ है, यहाँ है, ये सब। जलता होगा वो तो फिर काम करते हो तो? नहीं, ये आदत हो जाता है, तो आदत हो जाता है। मोटा चमड़ी हो जाता है वहाँ पे। मोटा चमड़ी। कितना पैसा मिलता है एक दिन में? यही 100 150। 100-150? हाँ, 100 पे। और एक दिन में कितना कमा लेते हो आप? 100-150 बस? यही 300 400। 300-400 रुपये चल जाता है गुजारा? कहाँ से चलेगा? मजदूरी और बढ़ना चाहिए। मजबूरी है। हाँ, मजबूरी में करना पड़ता है। For an outsider to come here in Bhagalpur at just near the river and see this, it's a sight to behold. Every color possible, all the rainbow colors present here, and you'll see lines and lines of the thread being colored in different colors, the reds, the yellows, the blues, the greens, pinks, everything. But the people, those who are making it possible, those who are spending their day and night coloring this so that all of us can, look absolutely wonderful wearing all these colors,
their lives are a story of a struggle, a continuous struggle that doesn't change, a story which is missing all these colors. With my colleague Alok Verma and Ashwini in Bhagalpur, Ankit Tyagi, NDTV.